You can hear now? Yes, doctor. Thank you. गिरीश भाई, रुपेश भाई. International online series for expectant mothers, family members, gynecologist and antenatal healthcare provider. Divine Garbh Sanskar, three-dimensional antenatal care. A program for expectant mothers to be a master craftsman. A program which talks about the pathway of celebrating life with complete blossoming of your consciousness leading to healthy and happy mother-baby. Internationally renowned motivational speaker B.K. Shivani shall enlighten the path of shaping your child's personality. The time is now. On 13th December 2020 from 10:30 a.m. to 12 p.m. Followed by inaugural session till 1:30 p.m. Web series starts from 19th December 2020 to 28th February 2021. Every Saturday from 5 p.m. to 6:15 p.m. and Sunday 11 a.m. to 12:15 p.m. Medical professionals shall share simple practices for shaping your baby's destiny through mind power. Each session will be followed by the Raj Yoga meditation course by experts guiding the pathway of peaceful mind and blissful life. Medical participants of the web series shall be entitled for ICOG credit points e-participation certification. Join us live on Facebook and YouTube channel Divine Garbh Sanskar, a public initiative by Medical Wing of Brahma Kumaris, AMOGS, D.Y. Patil Medical College, Navi Mumbai, DSRF, Navi Mumbai, ICOG, iMums, Public Awareness, Study of Breast, Young Talent Promotion, Safe Motherhood Committees of FOXY, ISOPUB, and AICC RCOG. For further correspondence, contact Organizing Secretary BK Dr. Shubhada Neel. ये डिवाइन गर्भ संस्कार की जो एक सुंदर सी सीरीज आपके लिए चलेगी, ये बस आज के लिए नहीं है, लेकिन 28 फरवरी तक हमारे बीच बहुत ही जाने माने अनुभवी वक्ता आएंगे, जो कि अपने सुंदर अनुभवों को हमारे बीच रखेंगे कि कैसे हम आने वाले मेहमान को बहुत ही सुंदर ढंग से तराश सकें। इसके लिए एवरी सैटरडे और संडे आपके लिए सेशन आयोजित किए गए हैं। सैटरडे को शाम को 5 बजे से 6:15 बजे तक और संडे को मॉर्निंग 11 बजे से 12:15 बजे तक आपका ये सत्र होगा, जिसमें बहुत ही सुंदर विषय रखे जाएंगे।
तो आप सब इनका भी भरपूर लाभ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही डिजाइन किया गया है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मेडिकल विंग की तरफ से। अब आइए इसकी उद्घाटन सत्र की ओर चलते हैं, जो 3 डायमेंशनल एंटीनेटल केयर इंटरनेशनल ऑनलाइन सीरीज की जो शुरुआत हो रही है, उसका आज इनॉग्रेशन सेशन है। इसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय ब्रह्मा कुमार गिरीश भाई जी को, जो मुंबई से हमारे बीच जुड़ेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही साथ हम सबके बहुत ही प्रिय भ्राता हैं। हमारे जीवन को श्रेष्ठ सुंदर बनाने के लिए आप अलग अलग वर्ग के लोगों को अपने सुंदर वक्तव्य से सजाते संवारते रहते हैं। तो अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता गिरीश जी का। ओम शांति। Om Shanti. I hope my sound is clear. Once again, Om Shanti, Namaste, and good afternoon. The prelude to this program, आपने ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी बहन को सुना। बहुत कुछ बातें हम क्लियर कर चुके होंगे, and formally 3-dimensional antenatal इंटरनेशनल ऑनलाइन वेब सीरीज को हम फॉर्मली इनॉग्रेट करेंगे। और ये प्रोग्राम प्राइमरली एक्सपेक्टेड मदर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, गायनोकोलॉजिस्ट के लिए और जो एंटीनेटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, सबके लिए एक बहुत सुंदर ब्लेंड करके एक प्रोग्राम बनाया गया है। This program is a very beautiful synergy between science and spirituality. स्वामी विवेकानंद ने बहुत सुंदर एक बात कही थी, स्पिरिचुअलिटी इज द साइंस ऑफ द सोल। आत्मा का जो विज्ञान है वही आध्यात्म है। एंड द नोशन दैट साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आर समहाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डज डिसर्विस टू बोथ। और जैसे सिस्टर शिवानी कह रहे थे, अभी का जो समय चल रहा है, इसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का एक बहुत सुंदर amalgamation होना चाहिए। Spirituality, it is beautifully said, spirituality leaps where science cannot yet follow, because science must always test and measure, and much of the reality and human experience is immeasurable. So today and for the next 3 months, I'm so sorry if you can hear that sound of banging. वो हमारे शायद घर के ऊपर कुछ काम चल रहा है। So friends, आज और अगले 3 महीने के लिए we will have experts from both the field, experts from the medical field, gynecologists, experts as well as spiritualist meditation experts to guide and pave the way towards a very beautiful, healthy, happy and prosperous life to the little angel and to the entire family and to the world. So friends, to start with, I'll request Dr. Banarsi Lal Shah ji, जो कि हमारे Executive Secretary of the Medical Wing of Raj Yoga Education and Research Foundation हैं। He is the Director of Ever Healthy Hospital, Mount Abu, Rajasthan। वो Trustee and Treasurer हैं of Global Hospital and Research Center Trust Mount Abu। उन्होंने उनके नेतृत्व में he has organized more than 50 mind body medicine conferences in India। तो मैं डॉक्टर बनारसी लाल शाह जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करें, सभी का वेलकम करें और वेलकम एड्रेस दें। आदरणीय बनारसी लाल भाई जी। ओम शांति। थैंक यू। परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, आदिदेव ब्रह्मा बाबा और हमारे महान हस्तियां कहें, सामने देख रहे हैं एक एक को, तो दिल तो करता है कि अरे इतने महान हस्तियों को तो हम माउंट आबू में बुला करके वेलकम करें, कहाँ हम घरों में वेलकम कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस क्या कर दिया है कि इतने महान हस्तियों को घरों में बंद कर दिया है, अपने अपने क्लिनिक और हॉस्पिटलों में बंद कर दिया है। तो हम माउंट आबू ईश्वरीय विश्वविद्यालय इंटरनेशनल हेडक्वार्टर की तरफ से मेडिकल विंग की ओर से हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
स्वागत करते हुए मेरा दिल गदगद हो रहा है कि इतने महान हस्ती हमारे आदरणीय शिवानी दीदी कितना अच्छा सरल शब्दों में इतना अच्छा सबको संदेश बाबा का दिया, लेक्चर दिया। मैं सुन रहा था कि कितना सरल शब्दों में सबके अंदर शब्द कहें या भाव बैठ गया। तो हम आदरणीय दीदी जी का हम हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। डॉक्टर अल्पेश गांधी जो प्रेसिडेंट ऑफ फॉक्सी हैं, सर मैं तो माउंट आबू में आपका स्वागत करना चाहता था, लेकिन हम यहाँ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर शांता कुमारी जी, आपका भी स्वागत करते हैं। डॉक्टर हरी सिकेश पाई जी, डॉक्टर मंदाकिनी जी, डॉक्टर सुचिता जी, डॉक्टर स्नेहा जी, डॉक्टर प्रीति कुमारी जी, डॉक्टर विजय पाटिल जी, डॉक्टर नंदिता जी, डॉक्टर अशोक मेहता जी, डॉक्टर उषा शर्मा जी, और हमारे क्या कहें, बहन कहें, डॉक्टर कहें, क्रीम सबको इकट्ठा करने वाली सुविधा नील कहें, नील माने तो बहुत बड़ा ये होता है। तो हम उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूँ। दादियों की तरफ से, संस्था की तरफ से आपको कोटि कोटि नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महान हस्तियों को स्वागत करने को हमको चांस मिला है। तो और ये ऑर्गेनाइजेशन कितना अच्छा है कि किसने ये कार्यक्रम, राजयोगा रिसर्च एजुकेशन फाउंडेशन, ब्रह्मा कुमारी मेडिकल विंग, DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, डिवाइन मदर बेबी संस्कार, भारत वर्ष ही नहीं पूरे इंटरनेशनल प्रोग्राम है। सचमुच सब बधाई के पात्र हैं। इतना अच्छा प्रोग्राम तो हम समझते हैं कि बहुत कम ही दुनिया में होता है, चाहे विश्व में होता है। तो ऐसे महान हस्तियों को हम माउंट आबू का भी निमंत्रण देते हैं। कॉन्फ्रेंस तो पता नहीं कब करेंगे, पर्सनली हम निमंत्रण देते हैं, आप आइए, ईश्वर के घर में आराम करिए। इतनी सेवा कर रहे हैं, इतने माताओं बहनों का आप ध्यान दे रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं देता है। आप इतने महान आत्मा हैं कि जिसके द्वारा समाज का, नई पीढ़ी का नींव पड़ रहा है, उत्थान होने जा रहा है, नई दुनिया के निर्माण होने जा रहा है। ऐसी आत्माओं को, माताओं बहनों का आप कल्याण के, उनके स्वास्थ्य के लिए आप इतना लगन से आप तत्पर होकर के सेवाएं दे रहे हैं। आप सब महान हस्तियों को फिर से कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ओम शांति। भाई साहब सभी को इनवाइट करिए कॉन्फ्रेंस के लिए माउंट आबू। सॉरी, माइंड बॉडी मेडिसिन, माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं 25 से 27 दिसंबर। छुट्टियों का दिन है, आप लोग थोड़ा रिलैक्स होकर के इसको सुनेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक से एक स्पीकर है। हमारी शिवानी दीदी, उसमें 3 शिवानी दीदी का लेक्चर है, उषा दीदी का लेक्चर है। टाइमिंग भी आपके अनुसार रखा है, सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8, कोई तकलीफ नहीं होगी। और 25 से 27 एक कॉन्फ्रेंस रहेगी, और 28 से 21 हमारी आदरणीय उषा दीदी वो शिविर कराएगी 1.5 घंटा रोज शाम को 6 to 7:30। तो हम चाहेंगे कि आप लोग तो बहुत बिजी हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बिजी लाइफ में से टाइम निकाल करके अपने लिए, ये जो टाइम निकालेंगे खुद के लिए निकालेंगे, कभी समय अपने लिए नहीं निकाले होंगे, लेकिन हमारे रिक्वेस्ट से आप अपने लिए टाइम निकालें और सभी शिविर में भाग जरूर लें और सेशन अटेंड करें। थैंक यू, आपने चांस दिया, सभी को दिल से थैंक्स। ओम शांति। डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपने इतने प्यार भरे शब्दों में, दिल के इतने मीठी उद्गार से सभी डॉक्टर्स का, सभी पार्टिसिपेंट्स का वेलकम किया, और आने वाले जो माइंड बॉडी मेडिसिन प्रोग्राम में भी सबको इनवाइट किया। भाई जी आपका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
Now I'll request Mr. Sudeep Mukherjee, Senior General Manager, Marketing and Sales, for the welcome address on behalf of our academic partner for this 3-month-long online web series. And the academic partner is Zydus. So I now request Mr. Sudeep Mukherjee to please give your welcome address. Thank you. A warm welcome to all dignitaries, esteemed faculties, speakers, chairpersons, and guests of honor. I bring warm welcome and greetings from Zydus Gynex Division. Zydus is fortunate to be an academic partner to this great webinar series, 3-dimensional antenatal care. And I especially thank Dr. Shubha Neel, who have conceptualized this wonderful idea and given us the opportunity to collaborate. The year 2020 has been a challenging year for entire humanity. As we are at the end of this devastating year and enter a new year, there is definite need of positive thoughts and actions and recreate happiness. My hearty thanks, and I am fortunate to listen to the deliberation of one of the greatest orators, motivators, and speakers, Sister B.K. Shivani Didi. Namaskar to you, Didi. And it was really wonderful. You have made the entire environment divine with your wonderful talk. And I am sure that our viewers now, the viewers who had listened to your talk, will have great insights and they will draw great inspiration. A warm welcome and thanks to you, Shivani Didi, from Zydus as well. And thank you, Dr. Shubha Neel, for giving this opportunity to Zydus to collaborate in this wonderful academic event. I now hand over the session to you, madam. Thank you. Yeah, thank you, Mr. Sudeep Mukherjee. Now I invite Dr. Niharika. Dr. Niharika, are you there? Yeah, let me introduce her. She is an infertility consultant at Rainbow IVF Agra. And currently she is the youngest chairperson of FOXY, Young Talent Promotion Committee 2020-22. She had delivered many lectures and talks at FOXY, ISAR, IFUMB, and has many publications under her name. She had been the recipient of numerous awards, both in India and abroad also. I request Dr. Niharika Malhotra to introduce Dr. Shubha Neel, who would share the aim and objective of this 3 months program. Dr. Niharika. Thank you, Girish Bhai. Om Shanti, everyone. What a beautiful start of today's morning with Shivani Didi. And I hope all of you are really enjoying this session like I am. I have given this opportunity to invite someone I really love personally, Dr. Shubha Neel. We all know her from her work done tremendously in Garbh Sanskar. She has actually organized more than 600 workshops, and she has been closely associated with the Brahma Kumaris and also has been practicing Raj Yoga since 2009. If we start counting the amount of work she's done for women's health, it'll take the whole day. But it gives me so much pleasure to welcome Dr. Shubha Neel. Thank you, Niharika, for that wonderful introduction. Thank you. So friends, Om Shanti, please share the screen. Hello. Yeah. Om Shanti, dear divine brothers and sisters, please accept greeting of peace and happiness from Almighty God and Dadi Vrute Muniji, Chief of Brahma Kumaris. It gives me immense pleasure to give brief about the aims and objectives of the Divine Garbha Sanskar. It's a 3-dimensional antenatal care international webinar series for expectant mothers, family members, gynecologists across India in collaboration with the medical wing of Brahma Kumaris, national gynecological organizations.
Our vision is to help the expectant mothers to create a value and virtue-based child. And our mission, the children of today are the leaders of tomorrow. And therefore, the focus should be to lay a strong foundation when the baby is in the womb, so as to build a healthy, happy future generation. So Garbha Sanskar has been considered as an important method to imbibe virtues in the baby inside the womb. Studies have also shown that the practice of Garbha Sanskar has a positive impact on mental, emotional, and physical well-being of the expectant mother and baby. Divine Garbha Sanskar, three-dimensional antenatal care international webinar series is a unique initiative in collaboration with medical wing of Brahma Kumaris and national gynecological organizations, which focuses on the providing holistic antenatal care, which will not only reduce the maternal and the perinatal morbidity and mortality, but will also prevent several intergenerational NCDs such as diabetes, hypertension, cardiovascular diseases. It would address the fetal origin of adult diseases, thus preventing many NCDs. The components of the projects are periconceptional care, good quality antenatal care, healthy diet, exercise, stress managing techniques. Divine Garbha Sanskar program uses three-dimensional antenatal care, holistic diet, exercise, and Raj Yoga meditation during pregnancy and childbirth, which has the profound positive benefits for the mother and the new creation. As you are all aware that the thoughts, feelings, emotions, and the mental state of the expectant mother affects the health and the behavior of the growing fetus, and even later as an adult. The present antenatal care focuses mainly on the physical health, and the other dimensions are mostly neglected. This program gives equal importance to mental, social, and spiritual health of the pregnant mothers to make them healthy and thus empowering the future generation. The spiritual lifestyle and the regular meditation practice as an important aspect of spirituality helps to adopt positive thinking, manage stress, and improve mental, social, and physical health. Breastfeeding and the postpartum care during postpartum period, which promotes health of the mother and the baby, will also be addressed. We are working on the divine cause, visualizing a world of purity, peace, and prosperity. It is in this decisive period of 9 months when maximum efforts are to be taken for the betterment of the offspring. Today, it is scientifically proven that the unborn baby can not only listen and feel, but it also responds in its own way. This is why it is important to transfer positive thoughts, positive energies, and the positive emotions to the baby and to the pregnant woman. The mother can shape up baby's first impression by listening to good music, reading material that stimulates positive thinking, meditating, doing yoga, and much more. So commencing from December 13th, 2020, that's today, the series will be spanned over the period of 3 months, every Saturday 5 to 6:15 p.m. and every Sunday 11 to 12:15 p.m. followed by 4 days Raj Yoga meditation course on Monday to Thursday 5:30 to 6:30 p.m. where senior gynecologists and Raj Yoga practitioners will share simple spiritual tools aimed at empowering expectant mothers from busy to easy, anger to patience, irritation to compassion, stress to happiness. As we make this paradigm shift in our consciousness, life will become a celebration. And the medical fraternity will be awarded with the ICOG credit points and e-participation certificate. This series aims to sensitize gynecologists and other antenatal healthcare providers with solution-oriented approach to empower expectant mothers. This will enable healthcare providers in addressing their physical and physiological challenges in their journey of pregnancy. I'm very happy to share that the Brahma Kumaris, an organization with large spread and reach across globe, is associated with the project to teach meditation to the expectant mothers and also to the healthcare providers. Special highlights for my colleagues from medical fraternity. The program would enable them to manage their pressure with pleasure as they themselves would learn meditation. Let's together infuse new enthusiasm in bringing positive transformation to the mindset of the antenatal healthcare providers, expectant mothers, and their family members. I'm optimistic that with the efforts from all the groups associated with this project, that's Medical Wing of Brahma Kumaris, AMOX, D.Y. Patil Medical College, Divine Sanskar Research Foundation, ICOG, IMUMS, ISPAT, Public Awareness Committee of FOXY, Study of Breast Committee FOXY, Young Talent Promotion Committee FOXY, Safe Motherhood Committee FOXY, Medical Disorders in Pregnancy Committee FOXY, AICC, RCOG, and ISOPA. All these associations, the expectant mothers in every part of our country would be immensely benefited.
To sum up, I would like to share that each parent in this world has a dream for their child, and they have the same prayer to the Almighty. Their children should be healthy, wealthy, successful, having all divine virtues. The Almighty, our spiritual parent, also forces recreation of the beautiful world, which would be full of peace, love, purity, and happiness. Thus, I am very happy to share that this Divine Garbha Sanskar 3-dimensional antenatal care international webinar series is a step forward towards this beautiful cosmic blueprint. From bottom of my heart, I would like to acknowledge especially the FOXI presidents, the present president, Dr. Alpesh Gandhi, 2018 president, Dr. Jaideep Malhotra, 2019 president, Dr. Nandita Palchetkarji, and 2021, the president-elect, Dr. Shanta Kumari Madam, and 2022 president, Dr. Rishikesh Pai sir, and everyone, the all chairpersons, all Foxians who worked relentlessly in making this project a great success. I'm sure all my fellow gynecologists, friends would work together in this endeavor of creating a new world of peace, compassion, and divinity. Stay safe, stay healthy, stay divine. And definitely I would like to thank the Doc Mode as well as the Zydus for doing the tremendous work. Thank you one and all. Om Shanti. Thank you, Dr. Shubha Neel, for that beautiful way to present the aim and objective. And I'm very confident that all of us together, we will be able to achieve the aim and objective. खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार। Hitesh, just a souvenir copy. दीदी आप रिलीज का डॉक्टर अल्पेश गांधी एंड दीदी आप रिलीज का अनाउंस कर दीजिए, आप कुछ इसके बारे में कहिए दीदी। Om Shanti. I personally feel today whom to give the credit for this. Ki Paramatma ki prerna say it's definitely an inspiration from the divine. But I think it's also the vibration of these souls who are coming now. They're very, very special children who are coming. So actually, it's also they who have invoked this program to happen, because even while they are in the womb, they want to start their preparation right now. So it's a collective consciousness of many, many people together, inspiration from God, pure intention for all the doctors, the healthcare professionals, the intent of the parents who were going through a lot of fear and anxiety, especially because this was happening during COVID times. There was another thought process going on there. But it's the purity of those souls in the womb who have invited this program into the life. And I'm sure it's going to change a lot of destinies, not just the destiny of the child, but also the destiny of the family where those children are coming. So it's going to be a magical experience for everybody. That's certain. Thank you so much. Om Shanti. स्वस्थ
खुशहाल माता और बालक का दिव्य निर्माण। गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार, डिवाइन गर्भ संस्कार। To watch Divine Garbh Sanskar channel on YouTube, subscribers on youtube.com/Divine Garbh Sanskar. Just a claim for healthy, happy mother and baby.